हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ द सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने यहाँ पे बात कर लिया था बैंड थ्योरी का एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने समझा इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे बात किया था होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट इन सेमीकंडक्टर जो कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैरियर ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स तो आप लोगों को पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस होल? होल्स आर नथिंग बट इट इज an absence of electron which act as a positive charge center। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस की प्लेस है जो कि एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे देखते हैं? सपोज दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस वन इज द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने 4 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाया? क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे कार्बन फैमिली में आते हैं एंड कार्बन का जो ग्रुप नंबर है दैट इज ग्रुप 14 और यू कैन राइट इट एज ग्रुप 14। सो ग्रुप 14 में यहाँ पे क्या होता है क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप 14 में है तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाया। अब एनी समहाउ फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण से 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले गए कंडक्शन बैंड में। तो जैसे ये जंप करके जाएंगे मुझे यहाँ पे मिलेगा वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंसी क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड में अब वापस चले गए हैं, इसलिए। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। एंड इसी तरीके के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। आई होप आप लोगों को होल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज होल और व्हाट आर होल्स, होल्स आर द पॉजिटिव वैकेंट साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 2 तरीके के होंगे सेमीकंडक्टर। एक है इंट्रिंसिक and extrinsic conductor। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल अगर देना पड़े तो
silicon and germanium are the examples of intrinsic semiconductor. Here number of holes, okay, number of holes, n subscript h means number of holes is equal to number of electrons, okay. एंड हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है फॉर व्हाट, कंडक्टर्स, बट इस वाले केस में होगा अपोजिट, टेम्परेचर बढ़ने के कारण से रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, घटेगा. व्हाई, बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन होल pairs are generated. So due to this reason, with the increase in temperature, the resistance decreases. That means the conductance increases because the more number of electrons and hole pairs are generated with the increase in temperature. तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके अलावा कभी कभार आपको इसका यहाँ पे पूछा जा सकता है that why, question, the resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase in temperature. Answer, because with increase in temperature more electron hole pairs are generated. If they ask you about example of pure or intrinsic semiconductor, silicon and germanium, its value of Eg is 1 electron volt. Its value of Eg is 0.72 electron volt, already discussed in the last video. Another question, if they ask, which of the following have negative temperature coefficient of resistance? Conductor, insulator, semiconductor, superconductor. The answer will be semiconductor. Why? Because हमने पढ़ा है R is equal to R0 1 plus alpha T और T2 minus T1. Say T2 minus T1. So here T2 is all obviously greater than T1. But as the temperature is increasing, resistance is decreasing. That means R0 must be greater than R.
And this is only possible when alpha is equal to negative. Because if I say this one, then R by R0 from here. From here, R by R0 is less than 1. Okay? And 1 plus alpha T2 minus T1 is greater than R0. R by is this will be less than 1. Less than 1. R by R0 by R is greater than 1. So R by R0 is less than 1. So this one. And again what I have, T2 is greater than T1. That means this whole quantity is positive. So 1 plus alpha into some positive quantity, that must be less than 1. So the only case which I have as a negative is this alpha. So alpha is negative here. So the temperature coefficient of resistance for semiconductor is negative. I hope up to this it is clear for you for the intrinsic semiconductor. In the next video we will discuss about the extrinsic semiconductor. Thank you.